Data center world power. As the global data center market accelerates, driven by the explosive towards a brighter future. With Informa Markets. Power and Renewable Energy Department of Government of Madhya Pradesh. Thank you so much, sir. You have always been a big support for us for the years. Dr. Vibha Dhawan, Director General TERI. Then we have Prince Nari from Cambodia, who is also the business expert. Ivas Suwara, who is Deputy Head of Delegation European Union to India. His of course, Commercial State of Odisha. We have Mr. Peter Hall, Informa Markets, and this hosts this milestone in India's clean energy landscape. Is that just what a moment that we are already REI show today. From 76 gigawatts of renewable energy capacity in 2014 to 224 gigawatts is 20% year-on-year surge in capacity addition, underscoring the strength of our domestic ecosystem and the government's on Informa's position. So Informa is the world's largest exhibition organizer. We run about 600 events similar to this size all over the world, from Japan all the way through to South America, and we're pretty much the market leading exhibition organizer in all the countries that lie in between. We're investing heavily in our India operation. India is one of the most important growth markets to Informa. We recently made acquisitions in buying other exhibition companies in India, and we're looking to grow our presence here, both in terms of market and also in terms of, because we're already in 16 different sectors, and also grow our exhibitions where we have lots of potential.
And renewable energy is a huge priority for our business. It's one of the fastest growing events that we have in our portfolio here in India, but also globally. And we're very excited about the future and what we can do. And obviously this morning we also announced the launch of data center power, which we will co-locate in this event next year. So continuing to grow, continuing to innovate, and continuing to invest in this country. Thank you. For adding to our confidence that we are at the right track at the right time. And this actually is not the success of the event, it's more the success of the country. And I think we're all here to add value to where country stands today and where India needs to go forward, because 2047 we have been talking about that Amrit Kaal, which is nothing but the Viksit Bharat dream of our country. And I think each one of us has a moral responsibility to contribute to that cause. If we leave it to the government alone, that cannot happen. If we leave it to the private sector alone, it will not happen. It has to be a comprehensive and a total inclusive responsibility of each one of us. And I think who better than media, because even today we say the famous quote that the power of the pen is mightier than the power of the sword, right? So you have all that, the right reasons to let this sector reach the right hands, to write good about the sector, because this is the future of our next generation. And with this, I think we welcome any Q&A from the media houses. Thank you very much. Across this country. Then sitting to right of you is Mr. Debashis Das, who is Director Commercial from the state of Odisha. To the left of me is Mr. Peter Hall, who is President of IMEA region for Informa Markets, and Mr. Rajesh Khattar, who is Senior Group Director of Informa Markets in India. Just talking to you about this event, I think this is an event which has now become the India's largest and most influential show, and the battery show, which also talks about storage and the battery. So it's been growing from strength to strength. This year is a milestone edition for us, and perfectly on the occasion. As you heard yesterday, the big announcement where India has crossed the 500 gigawatts installed power capacity, and the renewable domain is giving more than 50% of that total energy generated in India. It's a perfect time to do this, bring this 18th edition of REI. This year, this show is growing in terms of size by about 25%. We have over 700 exhibitors this year at the show in REI alone, and over 350 exhibitors at the battery show. Over this next 3 days of this event, we are expecting we are close to 35,000 trade visitors for REI alone and over 20,000 for battery show, expecting 55,000 trade professionals coming into this show. The entire purpose of this show has been to how we propagate this the government vision of net zero emissions, ensuring that we create an ecosystem where the solar energy transition is happening in the right direction. For us, I think this show is not just an exhibition. It's a confluence of entire industry. As we say, there are so many things happening within this show. We have for pavilions from across various countries. We have pavilions from Germany, Belgium, Japan, China, Korea. We have the EU cluster collaboration platform pavilion also. In terms of we have received government support from Government of Odisha, who is a state partner for the first time. Thank you so much, sir, for partnering with us. We have support from institutional support from Ministry of Heavy Industries, Department of Science and Technology. So it's a perfect public-private collaboration that is happening at this show. Beyond that, we have a very strong bioenergy pavilion, which showcases, it's the largest ever pavilion we are putting, which is supported by MNRE. 65 companies from bioenergy space showcasing our potential of the biomass and alternative fuels as we speak. Content is the key for our shows, and we are running 5 different panel tracks of conferences, 3 for renewable energy, 2 for battery domain. We also have for the first time the Energy Storage Summit happening at our show. So we also have multiple CEOs. We have the REI CEO Roundtable, we have the REI Battery CEO Roundtable and the CTO Roundtable. So a lot of content is going to get generated, which is actually... I am seeing of all the media, and I am very happy about it. And they are all quiet also. Thank you very much. We will open it for Q&A soon. And the thing is that I would like to really compliment Informa Markets. They are already into the 18th edition,
And I just was having a talk that the way the renewable energy space is going at scorching speed, this should be more of a half-yearly event rather than it should be done twice a year at least to start with, because the way we are going. And we are here we feel honored to be a part of the entire Renewable Expo, and we are here to showcase our state as an investment opportunity, as state full of investment opportunities. As all may know that Odisha was the first state in the power sector which had initiated privatization of the distribution sector, and in that regard we are also planning to have a couple of tenders which are big tenders which are coming around the way, starting with floating solar, with BESS and with pump storage. So we look forward to this opportunity as a way of reaching out to people and getting a stakeholder opinion about how things are. And I once again thanks Informa Market. This is the biggest exhibition for renewable energy in the country. So I would like to compliment Informa Markets for organizing it, and this has been around for a very long time. It's the 18th show for the year for this conference, and all players, all stakeholders in the sector look forward to this show. There is a huge delegation from Europe that has come for this. So I would like to really compliment the organizers. It's organized very well. You can see the scale of the whole show. Large number of people large number of exhibitors are very keen to participate in this. So many international visitors come for this. So this underscores the importance. This also shows how important renewable energy is becoming in the country. Renewable energy is now cheaper than energy from coal. So which is a big thing. There was a time that it was considered that renewable energy is costlier. Now renewable energy is less than half the cost of power from a coal-based power project. If you set up a new coal-based power project, you would get power at almost 6 rupees per unit. And the cost would keep on increasing every year as coal becomes more expensive, as transportation becomes more expensive. But when it comes to solar, you get it at around 2 rupees per unit these days. And it's a fixed price for the next 25 years. So solar is much cheaper today than power from coal-based power. So that is why countries adopting more and more of renewable energy. I would also like to inform you that it is not in every country in the world that solar is cheaper than that from fossil-based sources. Some countries which are not adopting the right policies, there it is still solar is costlier than fossil-based fuel. Thankfully in India, right set of policies has been developed, and there's a lot of focus from developers, from financial institutions, from utilities. So everyone has come together to create the right environment to bring down the prices. I would again like to compliment Informa Markets for organizing this show. ऐड होती है तो जब एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी बढ़ेगी, सोलर पैनल बढ़ेगा, तो लैंड कहाँ से लाएंगे और किस तरह से इसको कोई टेक्नोलॉजी है कि उसको पैनल को छोटा किया जाए? पैनल्स एफिशिएंट हो रहे हैं, तो जिससे उसी पैनल का साइज कम हो रहा है, या कह सकते हैं कि उस साइज के पैनल ज़्यादा बिजली पैदा हो रही है। उसके अलावा जो और टेक्नोलॉजीज हैं, एग्री पीवी का एक आ रहा है कि नीचे इसमें खेती होगी और उसके ऊपर उससे पैनल लगाया सकते हैं। उसके अलावा पानी पे प्रोजेक्ट्स हमारे मध्य प्रदेश में एक 278 मेगावाट का प्रोजेक्ट एक ऑलरेडी चल रहा है, जिसमें कि पानी के ऊपर पैनल्स लगाए गए। कोई टेक्नोलॉजी है गवर्नमेंट के पास, कोई अडॉप्ट कर रही है विदेश से कोई, कि जिससे कि और पैनल को और छोटा किया जा सके? लगातार काम चल रहा है। साइंस तमाम जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस होते हैं, लैब्स होते हैं, इसमें भी काम लगातार चल और इम्प्रूवमेंट हो भी बहुत रहा है उसमें, पर और होने की संभावना ऑफ कोर्स है। और टेक्नोलॉजीज भी हैं, तमाम टेक्नोलॉजीज पे काम हो रहा है इसमें। सर, गवर्नमेंट सरकार ने कोई ऐसा प्लानिंग किया है अगले 5 साल के 10 साल के लिए, क्या कोई टारगेट्स वगैरह फिक्स करें सोलर एनर्जी के लिए? या हाँ, काफ़ी टारगेट्स हैं और हम जैसे यूपी के एक प्रोजेक्ट ऐसे भी लगा रहे हैं जो एमपी और यूपी दोनों को बिजली देगा, 6 महीने एमपी को, 6 महीने यूपी को। ठीक है सर। रिन्यूएबल एनर्जी में किस तरह से देश किस ओर बढ़ रहा है, मतलब गवर्नमेंट की क्या इनिशिएटिव्स है इसको बढ़ाने के लिए? So the capacity is going up,
the technology is going up and the cost is coming down. All of us having renewable energy, जैसे मनु सर ने अभी पहले ही बताया था आपको कि renewable energy में ऐसा अभी स्थिति आया है कि वो जो cost of renewable energy is cheaper than the cost of thermal power. So that being the case, there is a lot of future towards it and mostly क्या है कि ये sustainable nature का होता है, इसमें ज़्यादा कुछ प्रदूषण नहीं रहता है, तो उस हिसाब से renewable energy is the next big thing that is going to happen in the country. चैलेंजेस क्या क्या हैं? चैलेंजेस इसमें ये है कि पहले तो वो टेक्नोलॉजी का रैपिडली चेंज हो रहा है, दैट इज़ अ बिग चैलेंज. नंबर 2 इज़ दैट जैसे कि नॉर्मल कॉन्स्टेंस रहता है कि जैसे कि देयर हैज़ टू बी अ कॉम्प्लीमेंटिंग ग्रिड. ये जो ग्रिड होता है, जो नेटवर्क होता है, ट्रांसमिशन नेटवर्क, दिस हैज़ टू बी मेड मोर फ्लेक्सिबल, मोर रेजिलियंट. ये सब उसके बारे में ये सब अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ स्टार्टेड टेकिंग स्टेप्स, जैसा कि ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर्स बना रहे हैं, जाकि ये जो बिजली जो बन रहा है एट लोड जनरेटिंग स्टेशन, वो इट कैन बी ट्रांसमिटेड टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री. ठीक है. इसमें कितने कंट्रीज ने हिस्सा लिया और क्या इसका उद्देश्य है? तो ये हमारा 18th ईयर ऑफ द शो है, रिन्यूएबल एनर्जी शो. ये दरबदर बढ़ रहा है एवरी ईयर, इट्स बीन इंक्रीजिंग. और ये साल थोड़ी नीचे करो. अगर दोनों शो, बैटरी शो और रिन्यूएबल शो मिला के 1100 से ज़्यादा एग्जिबिटर्स आए हुए हैं ये शो में, और पार्टिसिपेशन फ्रॉम ओवर 40 कंट्रीज़ है. और तो उद्देश्य यही है कि कैसे क्लीन एनर्जी मोमेंटम को बढ़ाया जाए. जो प्रधानमंत्री जी का हमारा जो उद्देश्य है कि क्लीन एनर्जी रहे, आज आगे फ्यूचर में एक जो फॉसिल फ्यूल्स को डिप्लीट करने वाले जो एनर्जी है उससे ज़्यादा मूव होकर क्लीन एनर्जी में मूव करे, और जो नॉट ओनली जनरेट करो, उसको कैसे स्टोर करके चीपर रिसोर्सेज में स्टोर करके आगे यूज़ हो सकते हैं. तो क्या पहले होता सोलर से जनरेट होके अगर नहीं यूज़ किया तो वेस्ट होता था. अभी स्टोरेज हो रहा है उसका, स्टोर करके, और स्टोरेज का प्राइसेस भी कम हो रहा है. सो वो सारे नए नए डिवाइसेस, कंपोनेंट्स, वो सारे ये शो में एग्जिबिट हुए. योगेश जी, 18वां एडिशन है आपका, ये क्या अचीवमेंट है अब तक? आई थिंक दिस इज द लार्जेस्ट एवर शो. वी आर वेरी हैप्पी दैट्स ग्रोइंग. और ये अगर मैं पिछली साल से देखो, ये पिछली साल से 25% ग्रोथ किया है. ये इतना बड़ा शो पे ऑलरेडी ग्रो करना है, इट शोज दैट दिस सेक्टर इज ग्रोइंग. बहुत डिमांड आ रहा है. और ये शो में एक शो नहीं बना है, सिर्फ एक एग्जीबिशन नहीं है जहाँ पे सिर्फ प्रोडक्ट्स और कंपोनेंट्स और टेक्नोलॉजी डिस्प्ले. यहाँ पे एक नॉलेज और नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है. गवर्नमेंट अपने तरीके से आती है, नॉलेज डिस्कशंस होते हैं, हम लोग अलग अलग इन्वेस्टर जोन्स के. हम लोग ने बहुत कुछ किया हर एक एलिमेंट को कवर करने के लिए शो. योगेश जी, मेरा एक सवाल है. आज भी हम बैटरी के लिए दूसरे देशों पर डिपेंड है, जबकि हम आपके मैन्युफैक्चरिंग तो है, बट इसकी क्वालिटी में कहीं ना कहीं दिक्कत आती है. आई थिंक ये हम वन ऑफ द लेट स्टार्टर्स है ये सेक्टर में. जर्मनी एंड ऑल द कंट्रीज आर वे अहेड इन दिस, बिकॉज उन्होंने पहले इवॉल्व किया था. बट अभी हमारे यहाँ पे नई मैन्युफैक्चरिंग आ रही है, जिससे हमारे यहाँ पे वो हिसाब से बनना चालू हो गया. सो आई थिंक अब 5 साल में देखो, इंडिया विल बी अ रियली सुपर पावर इन दिस सेक्टर. तो कहीं ना कहीं जब मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही होगी बैटरी की, तो कॉस्ट में बहुत फर्क आएगा. डेफिनेटली होगा. अभी क्या फिलहाल असेंबल हो रहा है, अभी वो मैन्युफैक्चरिंग भी होने चालू हुए हैं उसके कंपोनेंट्स. चैलेंजेस क्या है रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में? चैलेंजेस तो अभी देखा जाए तो डिमांड को मीट करने के लिए देयर इज नाउ, अगर आप फर्स्ट ऑफ ऑल LMM आ गए. इनिशियली क्या हम लोग बहुत डिपेंड है इंपोर्ट्स पे. अभी गवर्नमेंट ने जो LMM का रिक्वायरमेंट डाला है, जहाँ पे इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो जाए, तो वो उतना हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग आने बहुत ज़रूरी था. अभी वो हिसाब से अभी आ रही चालू हो गया है. सो वी आर ट्राइंग टू मीट दैट डिमांड विच इज गेटिंग जनरेटेड इन इंडिया. इसीलिए वो देखा जाए, जो कुछ उड़ीसा बोल रही गवर्नमेंट इज गोइंग टू कैप ऑन द एक्सपोर्ट, बिकॉज आज इंडिया में इतना डिमांड है. अगर इंडिया की डिमांड पूरी ना कर सको तो बाहर एक्सपोर्ट करके क्या करोगे? सर, आम आदमी से कितना कनेक्ट किया है आप लोगों ने अब तक? आम आदमी से बहुत ज़्यादा, बिकॉज ये मोमेंटम है. हम लोग यहाँ पे सारे इंड यूजर्स को भी बुलाते हैं, जो जैसे सोसाइटीज़ में या इसमें जो यूज़ करते हैं, दे आर ऑल्सो कमिंग एंड विजिटिंग द शो. और ये जाके इवेंचुअली अपने अपने कॉलोनीज में, सोसाइटीज़ में भी इम्प्लीमेंट हो. सर, एक सवाल ये कि जो पैनल बहुत बड़ा होता है, कोई टेक्नोलॉजी है आपको कोई अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे पैनल जो छोटा हो जाए? चूंकि इतनी लैंड कहाँ से कितनी लाएंगे, एनर्जी बढ़ेगी तब? द थिंग इज एफिशिएंसी बढ़ा सकते हो. नंबर ऑफ पैनल्स, हम पहले 10 पैनल लगते थे, अभी अगर आपके मोर एफिशिएंट पैनल तो आज 5 पैनल में काम चलेगा. पैनल का साइज तो वैसे ही रहता है, बट ओनली थिंग इज पैनल्स आर गेटिंग मोर एफिशिएंट, पावर जनरेशन इज इंक्रीजिंग, वेस्टेज इज रिड्यूसिंग, बैटरी स्टोरेज इज कमिंग इन. सो आज पैनल 10 पैनल लेके आप आज रात को क्या करोगे? तो अभी स्टोरेज का भी अगर इक्विपमेंट लोगे तो रात को भी आपको पावर मिलेगी. अब मनुष्य जी बोले वी कुड मूव इन द फ्यूचर टू 100% सोलर
और रिन्यूएबल सॉल्यूशन। गवर्नमेंट के पास कोई प्लान है इसको बढ़ाने के लिए? आपको आपसे इंटरेक्शन जब होता हो? गवर्नमेंट डेफिनेटली इज सेटिंग गोल्स। जो मैन्युफैक्चरिंग बेस दिया है इंडियन कंपनीज को, एक बहुत बड़ा बेस दिया उन्होंने, जो मैंडेटरी है। पहले सिर्फ सोलर पैनल्स के लिए था, अभी अपना इसके लिए कर रहे हैं कि आप मॉड्यूल्स की जगह पे अभी इन्वर्टर्स के लिए, अभी फर्स्ट के लिए, हर एक के लिए अभी नाउ दे आर सेइंग मैन्युफैक्चरिंग हैज टू हैपन इन इंडिया।